Good morning, everyone. Welcome back to our class. So, as I've told you guys that we will be discussing high yielding topics today. So, what is the meaning of this high yielding topics? Very first thing we have to understand this. High yielding topics are those topics which can fetch you more marks. Which can fetch you what? More marks. A less number of topics to revise, and more will be the marks. ऐसे कैसे हो सकता है? See, वी नो कि हमारे एग्जाम में हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, हर ग्रामेटिकल टॉपिक का एक पर्टिकुलर सेक्शन है. लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में हम मिलते हैं, पूछते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज so very first topic is this reading comprehension. So I have written the topic as well as their weightage, कितना एग्जाम में comprise करेंगे वो. Next is para jumble. It is around 21, 22. It is not currently, it's around 10 to 15, you can count. But this is the number that you will be finding over there, 10 to 15. And direct, indirect, yeah, you can again find 10 to 20 k in between you can find. Synonyms and antonyms 7 to 8. Idioms and phrases 4 to 5. Sentence improvement 15 to 20. Close test, it is 20 to 25. This close test is our close comprehension. Close comprehension इसी के अंदर आता है हमारा. Next, one word substitution. They have reduced them from 5 to 6. 8 to 10 से 5 to 6 reduce हो गया. Error spotting, very important. Correct spelling 3 to 4. Fill in the blanks, basic fill-ups, and miscellaneous 9 to 10. Make it from like 5 to 7. Okay. So, अब देखो why are we discussing these topics? The very first thing is रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा है 15 से 25 to 30. मतलब मिनिमम आप 15 to 20 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, जिसमें से आप 15 क्वेश्चन इन मिनिमम दे विल बी इजी क्वेश्चंस. इजी क्वेश्चंस, व्हाई आई एम सेइंग इजी क्वेश्चंस, क्योंकि उनका जो आंसर होगा इट विल बी इन आवर कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ. And now the remaining 5 questions जो डिफिकल्ट है वो कैसे हो सकते हैं? वो कैसे हो सकते हैं? The very first thing is it can be a meaning. ठीक है, किसी भी वर्ड का उठा के आपको मीनिंग दे देगा. Very first exception can be this. Inference वाले questions. There are different words in our comprehension. जैसे कि हमारे पास आता है अगर crux के ऊपर दिए हुए पैराग्राफ का क्रक्स क्या है, एसेंस क्या है, इनफेरेंस क्या है. तो क्रक्स और एसेंस तो इजीली पता किए जा सकते हैं कि वो पैराग्राफ किस चीज के बारे में बता रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू इनफेरेंस, इनफेरेंस मींस व्हाट, कि लास्ट कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनकी वजह से पर्टिकुलर सिचुएशन अराइव हुई है, ओके, व्हिच लेड टू आवर पर्टिकुलर सिचुएशन. That is what? That is our inference. So now they can ask us anything from all these. Okay, now let's see. हमारा reading comprehension जो है, I have told you 15 questions you will get, and in that you can get 2 to 3 paragraphs, each comprising of 5 questions. इन 5 में से आप 3 आराम से कर लोगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन दिस. वी विल मार्क इट एज 1. नेक्स्ट कम पैराजंबल वर्ड्स. पैराजंबल वर्ड्स 10 to 15 questions again you will see of such questions. We will see today reading comprehension and parajumble words questions, how we have to solve them. I'll tell you what are parajumble. These are what, कि आपको एक statement number 1 दे देंगे. This is statement number 1 and this is statement number 6. Okay. Now in between of you will be giving A, B, C, D. ऐसे 4 आपको ऑप्शंस देंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको बोलेंगे कि इनकी सीक्वेंस फिट करो कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद A सेंटेंस आएगा, B सेंटेंस आएगा, C आएगा या D आएगा.
उस बेसिस पे आपके पास ऑप्शन होंगे बी ए सी डी, पहले बी इज 1, ए इज 2, थर्ड इज सी, फोर्थ इज दिस, ओके, एंड दिस इज योर पैरा नंबर 5, ठीक है. सिमिलरली यू विल गेट डी ए बी सी, सी ए डी बी, इस तरह के आपके अलग अलग ऑप्शंस देंगे and you have to solve them accordingly. We will see what parajumble words are in our class later. Next we have direct and indirect speech. So when we talk about direct and indirect speech, I've told you kis tarah question aayega. We have done a lot of questions. You will get 4 options. You will get a particular direct statement or an indirect statement and you have to solve it with respect to that. Synonyms and antonyms, जो मुझे लगता है मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट, बिकॉज आपको हर वर्ड का सिनोनिम या हर वर्ड का एंटोनिम पता ही नहीं होगा. आई कैन गेट लाइक बेट ऑन दिस फॉर श्योर, बिकॉज you are not like, मैं भी अगर if I also attempt that paper, I'll also find 1 or 2 word very new in that question paper. So similarly, what you guys have to do, if you find any question from this, like if you can attempt, this will be 5 or 4 questions. If you can attempt 2 questions, मतलब 2 अगर आपको आ रहे हैं, then that's good. अगर नहीं आ रहे हैं, then leave it. So very 3 things that you have to focus. First of all, it's reading comprehension, parajumble words, direct and indirect, sentence improvement. Sentence improvement कैसे होता है हमारा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, हमने क्या है कि पर्टिकुलर इस सेंटेंस में कौन सा वो वर्ड है जो फिट होके सेंटेंस का ऑल्टरनेट वर्ड बताए, मतलब ऑल्टरनेट वर्ड बताना है हमें जो यहाँ पे फिट होगा एंड द सेंटेंस विल बी इंप्रूव, उस फॉर्म में. इट इज जस्ट सम लाइक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. इट इज व्हाट समवॉट लाइक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन. Sentence improvement, our questions are quite easy. We have done them in past as well, and we will be picking it up in our Sunday lecture as well. So sentence improvement is another thing. So what we have in our high yielding topic, I'm writing HY1. This is our HY2. This is our HY3. Expect करना कि इनमें से तो आना ही है. अगर ये प्रैक्टिस कर जाओगे, then you will be able to easily clear it out. Next, sentence improvement. HY4. Just minute. Just a second. Yeah. So यहाँ पे हमारा ये है. This is our HY1. This one is HY2. This one is our HY3. This one is HY4. Now comes close test. Close test में अगर आपने adverb, preposition, pronoun और adjective अच्छे से पढ़ा है. I'm not talking about everything, just these 4. कौन adverb, preposition, pronoun and adjective. That's all is sufficient कि अगर इसमें से you get 15 to 20 questions, you will be easily able to like attempt 12 questions. That will be correct. We are not talking about here incorrect. Okay. ख्याली पुलाव में नहीं रहना है. It's just like कि आपको एकदम reality based बात करना. You will easily be able to attempt these 12 because this one be what easiest one. अगर आपको rules खाली उन 4 topics के पता हैं, adverb के, pronoun के, adjective के, and the next one was adverb, pronoun, adjective, and one another was there. Okay, so all these, agar you know the rules of these, then it will be sufficient for you. Next, one word substitution. One word substitution, again, it will be the toughest part of your paper. It will be what? Again, the toughest part of your paper. Why it will be one of the toughest part of your paper? Because what we don't do, vocab. We don't revise vocab again and again. हम basic अपना उसको improvement में time नहीं लगाते हैं. Vocab में one word substitution is like you are given a meaning and you have to write down the one word that explains that very well. So one word substitution, again the trickiest part. I will not count it in a high yielding topic. Now,
This one 1, this one 2, this one 3, again 4, close test 5. It was prepositions, adverb, adjective, and pronoun. I forgot prepositions earlier. Now comes to error spotting. Error spotting is all based on what? Practice. उसके लिए क्या important है? Tenses. If you know this well, tense part well, then this topic will fetch you around 15 marks, 10 to 15 marks easily. Minimum 10, maximum 15. Correct spelling, I'll say again, अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं आता होगा, then spelling is something they play a very good game over there. Then again, spelling, I'll say fill in the blanks. If you have practiced close comprehension, then this is easy. Otherwise, it's no. Okay. So here we are with our some of the most important topics. I'll say first is the reading comprehension, second para jumble, third direct indirect, fourth is the sentence improvement, fifth one is close test, and the last one is our error spotting. Remaining, I will not say कि आपको करना ही नहीं है. If you are like, if you can, if you feel like that, yes, I can, then of course you should go for it. But if you don't feel like that you can, then don't go for it, because it will only give you what. Okay. So now let's move forward to another thing. So the most important topics you have to do, you have to practice so that you can just attempt all these questions are, topic number 1 was what? Prepositions. Now, pronoun, adjectives, adverbs, and last but not the least are tenses. These are the grammar topics. Apart from this, direct indirect के बगल में एक और topic है जो इसमें add कर सकते हैं, active and passive. Either you can get 5 from this and 5 from this, or 7 from this and 8 from this. ऐसा भी आपका distribution हो सकता है. And active and passive. These are the 7 to 8 topics that you have to just read properly. Read properly. Okay. So now let's start with our first very high yielding topic, that is reading comprehension. Reading comprehension से start करते हैं. We will practice these topics one by one. So now let's see. It states that very first topic is say each profession of trade, every art and every science. Now I have told you, जैसे कि ये हमारा paragraph number 1 है. This is our para number 1. Whenever we solve such question, the one thing that we have to keep in mind is what? The one thing that we have to keep in mind is our questions. So before solving it, read them. Because reading these questions, it is most important. Okay. अगर इससे क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चंस रीड करके पैराग्राफ सॉल्व करोगे, the very first thing it will fetch you is you will not waste time. Not waste time. You'll be ahead of those people जो इसको पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करने जाएंगे, फिर क्वेश्चन में को पढ़ेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे. तो बेटर है पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लो, जिससे जब पैराग्राफ पढ़ो तो डायरेक्ट सामने आंसर्स मिले. So let's do. So very first question states the special word used in a technical discussion. Special words used in technical discussion is what? Okay, this is our very first question. Second is the writer of the article is what? कौन है writer? Third is this passage is primarily concerned with what? This is our third question. And fourth is that true that various profession, occupation often interchange? अब बताना इनमें से एक option जो है वो कौन सा true है. And fifth is in recent year there has been marked increase in the number of technical terms in the nomenclature of all these. ठीक है, farming, fishing, sports and government. Now let's come to our question number 1 back. It states special words used in technical discussions are what?
special words which are used in our technical discussions are what? A states may never become part of common speech. B says never last long. C says should resemble mathematical formula. D says should be confined to scientific tasks. These are the four. Second option states a scientist, a politician, a linguist, a businessman. Writer of this article is called a scientist, a politician, linguistic, or businessman. Now, next. The passage is primarily concerned with what? Passage जो है वो किसके ऊपर based है हमारा? Various occupation and professions, technical terminology, scientific undertakings, and a new language. These are the four options. A fourth question states it is true that इनमें से कौन सा statement जो है वो true है that various professions and occupations they often interchange words. कि various professions and जो occupations होते हैं वो often क्या करते हैं? They interchange words. Next is there is always a non-technical word that may be substituted for technical word. हमेशा एक non-technical word है जो एक technical word के लिए हम substitute करते हैं. C is the average man often uses in his own vocabulary what was once technical language, not imant of him. एक average man जो है वो अपनी vocabulary में use करता है, often uses in his own vocabulary what was once technical language, not imant of him. जो पहले एक technical language थी but he was not aware of it. The option states everyone is interested in scientific findings. Every person is interested in scientific findings. Now let's move to our question number 5. It states that there has been a marked increase in the number of technical. This is number. There has been a marked increase in the number of technical terms in the nomenclature of what? Nomenclature of what? इनमें से किसके nomenclature में जो है there is what? Increase in the number of technical terms. Now let's go back to our paragraph. Okay. Now let's read it and let's solve the questions. Yeah. So question it states each profession of trade, every art, every science has its technical vocabulary. It states कि हर profession चाहे वो trade का हो, art का हो या फिर science का हो, it has what? It has its a technical vocabulary. मतलब उसके technical scientific terms होते हैं. The function of which is partly to design things or process things to have no names in ordinary. अब उसका function क्या है? या तो designate करना चीजों को, मतलब क्या है? Technical vocabulary दे दी हर एक word को कि हाँ हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के अपने टर्म्स होते हैं जो कि हमें नहीं समझ आते तभी तो उनके पास जाते हैं. Now next it states कि क्या करते हैं this vocabulary either it is used for designating things or processes which have no names in ordinary English and partly to secure greater exactness in nomenclature. अब उनका क्या है? उनकी ordinary English में कोई नाम नहीं है and what they secure and they secure what? Greater exactness in nomenclature. और exact जो उनका meaning है वो nomenclature में पता चलता है. Such special dialects or jargons are necessary in technical discussion of any kind. अब ऐसे dialects किसलिए important होते हैं? Technical discussion में किसी भी तरह. What this technical discussion implies over here is technical discussion is कि जब भी कोई आप किसी भी particular field के expert किसी topic पे बात कर रहे होते तो उस जगह के क्या vocab use करते हैं. I have given you the example of doctors. अब engineers है वो अपने machines को उसी according वो करेंगे. Now let's see. It states being universally understood by the devotees of particular science or art, they have the precision of a mathematical formula. अब देखो यहाँ पे क्या है? This is mathematical formula. अब यूनिवर्सली अंडरस्टूड मतलब किसी भी पर्टिकुलर साइंस या आर्ट्स जो है उसके जो जितने भी जो टेक्निकल टर्म्स है दे आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड. They have the precision of a mathematical formula. अब उन सबके पास क्या है? They have a precision for a particular formula. Besides, they save time for it is much more economical to name a process than to describe it. अब इससे क्या है कि अब किसी को आप कोई चीज एक्सप्लेन करने से अच्छा है बेटर क्या है कि उस प्रोसेस का नाम बता दो.
फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है. अब rather than explaining each and every step or each and every reaction of photosynthesis, what we do, we say that plant is performing what? Photosynthesis. अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे sunlight absorb हुआ, उसके बाद में breakdown हुआ, उसके बाद में starch absorb किया plant ने, इस तरह से food बना. No, we say that it is photosynthesis. So what it do? They say the name of the process rather than explaining it, because it saves what? It saves time. Thousands of these technical terms are properly included in every large dictionary. Yet as a whole, they are rather on the outskirts of English language than actually within its border. अब ये क्या है? कितने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, वो कहाँ है कि इंग्लिश लैंग्वेज है पर्टिकुलरली है, तो वो उसके आउटस्कर्ट्स में है, उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे. देन एक्चुअली विद इन इट्स बॉर्डर्स, उसके बॉर्डर्स से मतलब बोलेंगे ना एकदम फार चीजें हमें पता नहीं होती है. सो व्हाट दिस राइटर इज ट्राइंग टू से ओवर हियर कि द टेक्निकल टर्म्स दे आर व्हाट, दे आर रादर ऑन द आउटस्कर्ट्स, वहां से बाहर है, रादर देन उसके बॉर्डर पे होने से भी अच्छा क्या है, वो उससे भी बाहर है, लाइक दे आर far away from our reach. Different occupation, however, differ widely in the character of the special vocabularies. Different occupation hai, they differ widely in the character of the special vocabularies. In trade and handicraft and other vocations like farming, fishing, they have occupied a great number of men from remote times. The technical vocabulary is very old. Technical vocabulary बहुत पुरानी हो गई है. An average man now uses these in his own vocabulary. अब एक average इंसान है, वो क्या करता है, वो अपने ही words में उस चीज को explain करता है. The special dialects of law, medicine, divinity and philosophy have become familiar to cultivated person. और यही special dialogue इसका law का, medicine या divinity या philosophy का familiar हो गया किसके साथ? Cultivated person के साथ. जैसे जैसे इंसान cultivate हुआ वैसे ये सब जो special dialects थे, they become what? They become familiar to people. Okay. Now let's see what are first. The special words used in technical discussion are. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यही same statement पढ़ा. The special words used in technical discussions are. देखो यहाँ पे special dialects are necessary in technical discussion of any kind. किसी भी type के उसमें technical discussion में there are special dialects. अब let's see, यहाँ पे देखो इसमें options में क्या दिया हुआ है. May become part of common speech, never long lasting, should resemble mathematical formula, should be confined to scientific fields. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने था we have what? They have precision of a mathematical formula. और यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन में? They should resemble. Special words used in technical discussion resemble what? They resemble a mathematical formula. नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द राइटर इन दिस आर्टिकल इज व्हाट? राइटर क्या है? एक लिंग्विस्ट है. वो किसके बारे में बात कर रहा है? लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है. इसने यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेशल लैंग्वेज है इट इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंग्लिश, इट इज नॉट इवन विद इन इट्स बॉर्डर्स. वो एकदम उसके बाहर है. जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं यहाँ पे देखो हमारे इस वाले पैराग्राफ में, हमारी इस लाइन में है, दे आर रादर ऑन द आउटस्कर्ट्स. यहाँ पे हर जगह किसकी बात कर रहा है? वो लैंग्वेज की. किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? लैंग्वेज की. कौन सी लैंग्वेज? इज टॉकिंग अबाउट टेक्निकल लैंग्वेज. और किससे डिफरेंशिएट कर रहा है उसे? बेसिक लैंग्वेज से. Now let's move forward to our question number 3. It states the passage is primarily concerned with what? Passage जो है वो किससे concerned है? It states is various occupations and professions. बहुत सारे occupations या professions से. B option is technical terminology. C option is scientific undertakings and D option is a new language. अब यहाँ पे passage किसके बारे में बात कर रहा है? Technical terms के बारे में. हर जगह हमारा क्या था? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिकल लैंग्वेज, यही सब था. तो यहाँ पे हमारा पैसेज किसके बारे में कर रहा है? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज के बारे में. A fourth option states
इट इज ट्रू दैट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है? फर्स्ट इज वेरियस प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफन इंटरचेंज वर्ड, अलग अलग प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन जो है वो वर्ड्स इंटरचेंज करते हैं. बी इज देयर इज ऑलवेज अ नॉन टेक्निकल वर्ड दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर टेक्निकल वर्ड, हमेशा एक नॉन टेक्निकल वर्ड जो है वो टेक्निकल वर्ड के लिए सब्स्टिट्यूट करता है. ऑलवेज नॉट मेंशन्ड इन आवर पैराग्राफ, इनकरेक्ट. Various professions and occupations often interchange word, not mentioned in our paragraphs, incorrect. C option says the average man often uses in his own vocabulary what was once technical language, not imaginative. पहले एक टेक्निकल लैंग्वेज जो एक एवरेज मैन है वो पहले क्या यूज करता है? He often uses his own vocabulary, जो कि पहले क्या थी? एक टेक्निकल लैंग्वेज, एक टेक्निकल लैंग्वेज थी. अब एक एवरेज मैन उसको अपनी रेगुलर वोकैबुलरी में क्या करता है? यूज करता है. नॉट इमांड ऑफ हिम, उसने इमांड नहीं की है, उसने वो नहीं लाया है उस चीज को. इमेनेशन मीन्स व्हाट? व्हेन यू लाइक ब्रिंग अप समथिंग, व्हेन यू फाउंड समथिंग न्यू. ओके, सो व्हाट इज दिस? इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स मूव टू आवर ऑप्शन नंबर डी. Everyone is interested in scientific findings. Now, no one is interested in scientific findings according to a paragraph. So again, this option is incorrect. So option number C is our correct option. क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे लास्ट, अगर हम अपने लास्ट वाले पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये वाली जो लाइन है, इन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट एंड अदर वोकेशंस लाइक फार्मिंग, फिशिंग हैव ऑलरेडी occupied great number of men from remote times. The technical vocabulary is very old. An average man now uses this own vocabulary. Now uses this in his own vocabulary. तो यहाँ पे this and this statement states what? कि एक average man क्या है? He often uses his own vocabulary, जो पहले क्या थी? टेक्निकल लैंग्वेज थी, पर उसने वो इमेनेट नहीं की. तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट. इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. सॉरी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टेक्निकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो. In recent year, there has been marked increase in a number of technical terms in the nomenclature of what? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है. यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने देखा है, सी इट स्टेट्स व्हाट, कि अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है जो कि हमारे क्या हुए हैं? इमैनेट हुए हैं. नाउ लेट्स सी कहाँ पे दिया है. यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट? फार्मिंग एंड फिशिंग have occupied a great number of men from remote times and the technical vocabulary is very old. अब यहाँ पे देखो, average man now uses this in his own vocabulary. Special dialects like law, medicine, divinity have become familiar to the cultivated person. अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स है. क्या होगा? It is number. This increase in the number. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स हैं. इट कैन बी फार्मिंग एंड फिशिंग. यू कैन पुट एनीवन. ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में. अब जो हमने पहले सॉल्व किया था दैट वाज क्वाइट अ बिग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. अब नेक्स्ट यू कैन आल्सो गेट दी स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन और द 2 लाइन कॉम्प्रिहेंशन, लाइक 2 लाइन पैरास करके आपको मिल सकता है, ठीक है. दिस विल बी द 1 लाइन, दिस विल बी द अनदर लाइन. दैट्स ऑल. उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन देंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, या जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इफ एन ओपिनियन contrary to your own makes you angry, if an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. अब देखो ये जो है, I consider it as a moderate paragraph, ठीक है. इट्स अ मॉडरेट वन. मॉडरेट वन कैसे है कि इसकी लैंग्वेज कैसी है? इट इज नॉट सो टफ, नॉट सो इजी. अब यहाँ पे दिया है कि इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, अगर आपकी दूसरा ओपिनियन है विच इज कॉन्ट्ररी टू योर ओपिनियन, उससे आपको गुस्सा आता है, दैट इज अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू. अब इसका मतलब है कि आपको सबकॉन्शियसली पता है कि आप जो सोचते हो
वो उसको वैसा कुछ सोचने का कोई एक अच्छा रीजन आपके पास में नहीं है. इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 और 5, अगर कोई इंसान बोलता है कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 5, और दैट एन आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर, कि आइसलैंड कहाँ है, इक्वेटर पे है, 0 डिग्री पे है. यू फील पिटी रादर देन एंगर, आपको कैसा बुरा होगा, आपको पिटी फील होगा, आपको दया आएगी, उस पर गुस्सा नहीं आएगा. अनलेस यू नो सो लिटिल ऑफ अर्थमेटिक और ज्योग्राफी, जब तक कि आपको अर्थमेटिक और ज्योग्राफी का बहुत कम नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं है कि 2 + 2 क्या होता है, या फिर आइसलैंड कहाँ पे, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, यू विल ऑलवेज फील क्या है तो इंसान सही कह रहा है. अगर आपको पता है तो आपको उस पर दया कि यार बताओ कैसी बात कर रहा है. That his opinion shakes your own contrary conviction, कि उसका जो opinion है वो shake करता है आपके अपने contrary conviction को. Now let's move forward and see. अब देखो पहले questions read कर लेना चाहिए था. We have read the paragraph because it was quite small. Now let's see. It states, if someone else's opinion makes us angry, what does that mean? अगर किसी और का opinion हमें गुस्सा दिलाता है तो उसका मतलब क्या है? We are subconsciously aware of having no good reason for becoming angry. Okay. Next is, there may be good reason for his opinion, but not consciously aware of them. Next is this, our opinion is not based on good reason and we know this subconsciously. This can be the answer. We can consciously aware of any reason for our own opinion, for our own opinion. हमें डी ऑप्शन का मतलब है वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ एनी रीजन फॉर आवर ओन ओपिनियन, मतलब हम कॉन्शियसली अवेयर ही नहीं है किसी भी रीजन के अपने ओपिनियन के बारे में. So D option is what? Straight away incorrect. C option says our opinion is not based on good reason and we know this subconsciously. कि हमारा जो ओपिनियन है वो एक अच्छे रीजन पे बेस्ड नहीं है, इसलिए हमें गुस्सा आता है किसी और का ओपिनियन सुन के, और ये हमें सबकॉन्शियसली पता है. यही सेम लाइन हमारे पैराग्राफ में यहाँ पे गिवन है, of having no good reason for thinking as you do. It means the very same thing. So our answer will be option number C. Now let's move forward to next question. Next question states, your own contrary conviction refers to what? ये जो line थी आप your own contrary convictions का मतलब क्या है? That you feel pity rather than anger, कि आपको आदमी पे दया आ रही है गुस्से की जगह. The opinion that 2 और 2 are 4 and Iceland is a long way from equator. इसका मतलब ये कि जो ओपिनियन है, मतलब 2 और 2 जो है वो 4 है और जो आइसलैंड है वो बहुत दूर है इक्वेटर से. C states the opinion that 2 and 2 are 5 and Iceland is on equator, कि 2 और 2 is what 5 and Iceland कहाँ है इक्वेटर पे. And D is the fact you know so little about arithmetic and geography. तो इनमें से तो एक भी applicable नहीं है, B, C and D. So the only option we left with option number A and this one is the correct answer. अब 18 में आपने पूछा कन्विक्शन का मतलब क्या होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन? कन्विक्शन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना. नाउ नेक्स्ट इट स्टेट्स 19, द राइटर सेज इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5, यू फील पिटी. क्यों आपको बुरा क्यों लगता है? जब आपको पता है, जब राइटर बोल रहा है कि 2 और 2 5, अगर कोई ऐसा बोलता है तो आपको उसके ऊपर दया क्यों आती है? नाउ लेट्स सी. Because you have sympathy? No. Because you don't agree with him? No. You want to help the person? No. And you feel sorry for his ignorance. आप उसकी ignorance के लिए sorry feel करते हैं. तो D option will be the correct answer. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिखा है unless you know so little, you will feel pity rather than anger. So little of the arithmetic or geography that the opinion shakes your own contrary conviction. Because आपको लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, बेचारा इसको कुछ पता ही नहीं है. So because of that, because of his own ignorance, you feel sorry for him. Question number 20 states, the second sentence in the passage states. Second sentence में जो passage है उसका मतलब क्या है? Second sentence देखते हैं. If someone maintains that 2 and 2 are 5, or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. Now let's say, यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस, अब इसमें मतलब देखते हैं क्या बोलता है. ये बिल्ड अप एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बाय रीस्टेटिंग इट फ्रॉम द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड सेंटेंस जो है वो क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट बिल्डअप कर रहा है
or first sentence by restating it from the opposite point of view. Opposite point of view से बता के एक argument state करने की कोशिश कर रहा है. Makes the main point which has only been introduced by the first sentence. एक main point बता रहा है जो कि सिर्फ एक first sentence में introduce किया गया है. C option. Simply adds a further point to the argument already stated in the first sentence. ये एक क्या है, सिर्फ एक फर्दर पॉइंट ऐड कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट में जो पहले से हमारे फर्स्ट सेंटेंस में स्टेटेड है. एंड डी इज इट इलस्ट्रेट द पॉइंट मेड इन द फर्स्ट सेंटेंस. क्या है ये, जो फर्स्ट सेंटेंस में जो पॉइंट बनाया गया है, अगर आपको गुस्सा आता है इट मींस आपके सबकॉन्शियस में पता है कि जो आप फील कर रहे हो दैट इज रॉन्ग. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज लिटरली इलस्ट्रेटिंग द पॉइंट, कि जो फर्स्ट सेंटेंस में पॉइंट है उसको इलस्ट्रेट कर रहा है. Okay, so we have discussed two kinds of paragraphs. We have discussed what? We have discussed two kinds of paragraphs. And now we will be discussing our further topics like close comprehension. We have discussed two. इसमें हमने दो तरह का किया. First one is the large one, big comprehensions, and then we did the small comprehension, small paragraphs. You can also get poems kind of poetic form में मिल सकता है. Next they can also ask questions like कि जो paragraph लिखा गया किस form में लिखा गया है. ठीक है, ये language based है, मतलब हमारा language knowledge दे रहा है, या फिर apart from that it is scientific. Next it is satirical. इस तरह के questions भी पूछ सकता है, या informative. Okay, इस तरह questions भी आपसे पूछ सकते हैं. You have to keep in this mind. अगर ये आप कैसे करोगे, for this you have to do what? You have to read the paragraph and analyze it. That's why it is important. So we have done this today. We will be doing our para-jumble words and direct and indirect in our upcoming class. Okay. So just make sure that you guys read them properly. Okay, high yielding topics थे हमारे reading comprehension. We will just focus on these days. Para jumbles, direct, indirect, active, passive भी लिख लो इसके आगे. Next, sentence improvement, close test, and that's all. Errors. Okay. So that's all for our today's lecture, guys. We will do these 6 high yielding topics in our upcoming lectures. And we will be starting our polity lectures from tomorrow. So that's all for today. And yeah, I'll keep you posted about, we will do all these our English topics on Saturday and Sunday further. Okay. So that's all for today. I'll see you people tomorrow. Have a good day ahead.